A very good morning, viewers. Welcome to the morning news show on CNN News 18. I'm Koina Sharma and I'll take you through all the latest headlines and insightful stories to kickstart your day. Now let's begin. First up, we are discussing the state of Manipur and the political face-off that has hit between the centre and opposition and continues to escalate over the Manipur violence. Now, PM Narendra Modi yesterday slammed the opposition over the Manipur issue, stating that it did not want a discussion in parliament over the issue. PM also added that the Manipur's truth would have hurt INDIA, the opposition, adding that the opposition staged a walkout and did not participate in the no confidence voting. Now, Congress leader Rahul Gandhi hit back at PM for barely touching upon the Manipur issue during his address in the Lok Sabha, accusing him and the cabinet ministers of having a lot of fun during the discussion. Now, Rahul also blamed the BJP for trying to divide India like they had done in Manipur. Let's take a look at some of the visuals. मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहते थे क्योंकि उनको मालूम था कि मणिपुर का सच सबसे ज्यादा उनको चुभने वाला है। उनको मणिपुर के नागरिकों की उनके दुख दर्द की पीड़ा नहीं थी, परवाह भी नहीं थी। उनके लिए उनकी राजनीति, देश से बड़ा दल, वो नहीं चाहते थे मणिपुर, और इसलिए क्या किया? मणिपुर की चर्चा तो टाल दी, अविश्वास प्रस्ताव लाकर के राजनीतिक बहस को ही उन्होंने प्राथमिकता दी। I watched the Prime Minister of India yesterday speaking for 2 hours, laughing, joking. The Prime Minister seems to have forgotten that the state of Manipur is on fire and has been on fire for 4 months. Women and children are dying over there. People are being murdered. Women are being molested, are being raped. And the Prime Minister of India is sitting in the middle of the parliament shamelessly, laughing. साफ साफ ऑपोजिशन की यही मांग थी कि भाई कमेटी बनाइए, सर्वदलीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलिए मणिपुर। प्रधानमंत्री जी आखिर क्यों नहीं गए? राहुल गांधी जी जा सकते हैं, विपक्ष की टीम जा सकती है, तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए मणिपुर? और हालात को सुधरना चाहिए, बल्कि और बिगड़ता जा रहा है वहां के हालात। तो क्या उन्होंने एक्शन लिया, क्या किया? वो तो वीडियो जो है वो वायरल हुआ, तो आप समझ रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री कह रहे ऐसी घटनाएं तो होती रहती है, कई मामले दर्ज है ऐसे, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी वहां की। Well, now moving our focus to the political war over the Bengal Panchayat elections, which refuses to die down as well. Now, Prime Minister Narendra Modi yesterday during an address slammed the ruling TMC government in West Bengal over political violence during the recently held Panchayat elections, alleging that the TMC has played politics with blood. Hitting back at the PM, Bengal CM Mamata Banerjee said that the Prime Minister has maligned the state. Now, Mamata further said that the PM's statement was without any evidence. Meanwhile, BJP chief JP Nadda is on a 2-day visit to Bengal, and the focus of the visit to set the tone for the 2024 Lok Sabha elections. अभी वहां पंचायत के चुनाव हुए। इस चुनावों में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला, ये भी देश ने देखा है। पहले चुनाव में इनका तरीका क्या है? पहले तो चुनाव की तैयारी के लिए समय मत दो, बहुत ही जल्दी जल्दी फॉर्म भरने की तारीख घोषित कर दो। फिर कोई भी विरोधी दल का, कोई भी बीजेपी का व्यक्ति पर्चा ही न भर सके, इसके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करो। और अगर मानो उसने चातुर्यपूर्वक फॉर्म भरने के लिए जगह पर पहुंच भी गया, तो फिर चुनाव लड़ने में अड़ंगे डालना,
उनको घर घर जाने नहीं देना, प्रचार करने नहीं देना, धमकियां देना, और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं को धमकाना ऐसा नहीं, वोटरों को भी भयभीत कर देना, और बीजेपी की जो समर्थक रिश्तेदार हैं उनको भी जीना मुश्किल कर देना, घर से निकलने नहीं देना। और जब वोटिंग होती है तो उस वोटिंग में थप्पेबाजी करना, ये टोलाबाजों की फौज थप्पेबाजी की फौज बन जाती है। सारे गुंडों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, कितने पोलिंग बूथ को कौन कैप्चर करेगा, मतपेटियां उठा करके भागना, और फिर जब काउंटिंग होता है तो एक एक वोट पर अड़ंगे डालना, भय का वातावरण बनाना, काउंटिंग में से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उठा करके बाहर ले जाना, बैठने नहीं देना। इतने जुल्म के बाद भी ये पश्चिम बंगाल की जनता है, उसका प्यार है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देते रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी जीतते जा रहे हैं। और जब जीत जाते हैं तो उनको जुलूस नहीं निकाल देना, कोई जुलूस निकालने की कोशिश करे तो हमले बोल देना, जानलेवा हमले करना। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की राजनीति का यही तरीका है। वहां हमारी बहनों को, हमारे आदिवासी भाई बहनों को कैसे प्रताड़ित किया जाता है, ये हम भली भांति जानते हैं। Now, CNN News 18 spoke exclusively to West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee over Prime Minister's scathing attack at the TMC. Let's listen in. Whatever he can, he is speaking without any evidence. He wants the poor people should die, the country should die, the common people should suffer, and only BJP is their backup. Cannot reach the people with their ideology. Forgotten all the ideology. Their ideology is only to create. Well, you cannot raise the corruption issue because you are fully surrounded by so many issues like PM Care Fund, like Rafale agreement, like the agreement to sell the defense factory and all, to sell the private sector all. 2000 note demonetization in the name of note denomination, and also the 2000 note now you want to cancel it because of your party interest and your interest. So don't forget that people are fool. You can fool the people some of the time, but you cannot fool the people all the time. So first, charity begins at home. See your own face. You don't take action against of your people who are corrupted, who is totally involved in character assassination case, atrocities on women case, atrocities on wrestler, atrocities on Manipur, atrocities in everywhere. Even your people killed our Bengal, the 16, 17 people, more than. And you are giving the batash, mane hawa, some political wind to them. So first behave properly. ऐसा है कि ममता दीदी को ना इस देश की संवैधानिक व्यवस्था पे भरोसा है, ना इस देश के जजों पे भरोसा है, न संविधान पे भरोसा है। उनका बस चले तो वो इस देश से ही भाग जाएंगी। वो माय लॉर्ड सेव दिस कंट्री, अरे ये कहाँ था ये सब शब्द जब यूपीए के शासन में मंत्री बनी हुई थी? उस वक्त कंट्री को नहीं बचाना था। आप कहते हैं कि बंगाल में संतरास हुआ, वायलेंस हुआ, किसने किया? भाजपा। कौन शुरू किया? भाजपा। हम लोग और सारे भारतवर्ष देख रही है कि अत्याचार हो रही है भाजपा जहां सरकार बनी है उन राज्यों में, जैसे देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में आदिवासियों दलितों पे ऊपर पेशाब किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, मारा जाता है, खून किया जाता है, उन पे बलात्कार किया जाता है। और आप कहते हैं बंगाल के आदिवासियों को नहीं देखती है ममता बनर्जी? सीएजी की रिपोर्ट हाल ही में ये कहा है कि आयुष्मान भारत बोलिए या और भी जो केंद्र सरकार के जो स्कीम्स है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गैप्स आए हैं। बंगाल के विषय आपके जो भाषण में आज आया है, बंगाल से इस तरीके के सौतेला सलूक क्यों इस तरीके की सौतेला व्यवहार किया जा रहा है?
Well, swiftly moving our focus, now ahead of the 76th Independence Day, Prime Minister Narendra Modi urged the nation to take part in the Har Ghar Tiranga movement from the August 13th to the 15th of August. Now, PM Modi said that the Indian flag symbolizes the spirit of freedom and national unity. He also urged the Indians to upload their photographs on Har Ghar Tiranga website. Now, this comes after the union ministers and other BJP leaders participated in the Har Ghar Tiranga bike rally at Delhi's Pragati Maidan on Friday as a part of the upcoming Independence Day celebrations. Now remember, PM Narendra Modi had launched the Har Ghar Tiranga campaign on the occasion of Amrit Mahotsav of Independence last year. देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा यह कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है। पिछले वर्ष भी पूरे हर्ष, उमंग और उल्लास के साथ देशवासियों ने राष्ट्रीयता का ये भाव मनाया था। इस वर्ष भी नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर ब्रह्मगिरी विधानसभा, जो कि पूरी लोकसभा के अंतर्गत आता है, वहां चिलिका लेक में सातपड़ा में आज हमने लेक के अंदर, और चिलिका लेक विश्व का एक जाना माना लेक है, इस लेक के अंदर हजारों तिरंगे झंडे के साथ हर घर तिरंगा यात्रा ये मनाया है। और हमारे लिए बहुत बड़ा विषय है कि एनवायरनमेंट कमेटी की बैठक आज यहाँ थोड़ी देर पहले संपन्न हुई है। के बीच में मेरा माटी मेरा देश, ये जो संदेश है भारत सरकार का, उसके अंतर्गत आज हम लोगों ने एक तिरंगा यात्रा निकाला, जिन लोगों में अनुशासन का और देशभक्ति की जज्बे के लिए संदेश दिया गया और लोगों को देश के प्रति निष्ठावान और अपने कार्यों पर सतर्क रहने, सजग रखकर अपनी ड्यूटी करने के लिए अपने लोगों को भी सजग किया गया। Well, moving our focus now, amid corruption allegations against the Congress government by the BBMP contractors in Karnataka, the Commission Raw has now entered Madhya Pradesh with Congress alleging 50% commission charge on the BJP government. Now, Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra alleged that 50% commission is being taken from the contractors on Friday. Now, Priyanka Gandhi Vadra took to Twitter and said that the corrupt BJP government in Karnataka used to charge 40% commission but broke its corruption record in Madhya Pradesh by charging now 50% commission. However, MP Minister Narottam Mishra expressed displeasure over Priyanka's tweet and warned that legal action will be taken against Priyanka Gandhi if she does not prove her allegations, while the Congress is adamant with the same charge that the corruption is very much prevalent under the BJP government. Now, meanwhile, BJP leaders filed complaint against Priyanka Gandhi Vadra and other Congress leaders accusing Priyanka of spreading fake news on the basis of a forged letter. मैंने सवेरे जब ये मेरे हाथ में आया तो मैंने पूरे इंटेलिजेंस को लगाया कि इसको ढूंढो कहाँ है ज्ञानेंद्र अवस्थी। अब पूरे दिन और रात ढूंढ लिया, ना तो ये पता कहीं मिल रहा है बसंत विहार कॉलोनी लश्कर ग्वालियर मध्य प्रदेश, ना कहीं आदमी मिल रहा है, ना इसका कोई अस्तित्व है। और इस पे आप देखो सबके ट्वीट, प्रियंका गांधी बेटी कॉन्ट्रैक्टर की चिट्ठी लिखा, 50% कमीशन मांगा जा रहा है, जांच करो। कमलनाथ की मध्य प्रदेश का हर नागरिक या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है, 50% कमीशन मध्य प्रदेश की बीमारी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी के सभी महानगर पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। प्रियंका गांधी, कमलनाथ, अरुण यादव व कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल्स के सभी जिला पदाधिकारी पूरे प्रदेश के उनके विरुद्ध यहाँ पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर आवेदन देने आए हैं। उस पत्र में यह आरोप लगाए जा रहे हैं किसी ज्ञानेंद्र अवस्थी के नाम से वो पत्र है, मध्य प्रदेश लघु एवं मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ के नाम से, जिसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोई भी काम कॉन्ट्रैक्टर्स का पेमेंट जो ये काम करते हैं पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स बिना 50% के कमीशन के नहीं होते हैं। वास्तविकता में ऐसा कोई ज्ञानेंद्र अवस्थी नामक व्यक्ति नहीं है और न ही ऐसा कोई संघ अस्तित्व में है। देखिए, आज फिर कांग्रेस ने नेहरू परिवार की जो परिपाटी है कि इस देश में झूठ और फरेब की राजनीति को आगे बढ़ाया जाए, वो मध्य प्रदेश के चुनाव आते आते वो और ज्यादा फैला रहे। एक झूठा पत्र, एक झूठा
व्यक्ति, एक झूठा संगठन जिसका अस्तित्व नहीं है, कोई संगठन है नहीं, कोई व्यक्ति है नहीं, जिस पते पर वो कार्यालय बताया गया है वो कार्यालय नहीं है, वो पता नहीं है, और उसके बाद भी ये झूठ की राजनीति सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही है। देखिए, इसमें पार्टी विशेष बीजेपी की तरफ से एक सोशल मीडिया में कुछ कंटेंट वायरल हो रहे थे, जो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया था, जो ठेकेदारी से लेकर के उसमें कमीशन पे काम कराया जाता है। इस संबंध में तो इन्होंने इस संबंध में एक ज्ञापन दिया है, जिसमें एक जांच का विषय है। जांच करने के बाद जो भी इसमें धाराओं का समावेश होगा, उन धाराओं के आधार पर आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हर बीजेपी के पदाधिकारी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। उसमें लेख किया गया है कि कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों के द्वारा सोशल मीडिया में कुछ भ्रामक जानकारियाँ डाली जा रही हैं और कुछ फेक जानकारियों के कारण और हमारे लोग बदनाम हो रहे हैं, तो उसकी जांच की जाए। उस पर से जिनके द्वारा मतलब ये ऐसी सोशल मीडिया में जो पोस्ट डाली गई है या ऐसे कुछ तथ्य लोगों के बीच में प्रस्तुत किए गए हैं और उनकी जानकारी जुटाई जा रही है, और जो भी तथ्य आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। Well, now moving our focus to the sports segment. The Indian national hockey team has claimed the Asian Champions Trophy 2023 title with an emphatic win of 4-3 against Malaysia at the Mayor Radhakrishnan Stadium in Chennai yesterday. Now, it is India's record 4th Asian Champions Trophy title, making them the most successful team in the entire event. Now, India had earlier thrashed Malaysia with 5-0 in the round-robin league stage. Now, Malaysia was aggressive in the very first half as the Indians found it difficult to restrict their opponents. Now, India, however, converted their first penalty in the 9th minute, with Jugraj scoring with a fierce flick to the right of the Malaysian goalie. Well, this Independence Day, the nation and particularly the national capital is getting ready for the 18 heads of state G20 summit, and this time excitement is also at an all-time high as market commercials, spaces, government buildings are all full of G20 logos and brandings. Now, CNN News 18's Siddhant Mishra brings us this report on the same. Let's take a look. As the excitement for the G20 summit reaches an all-time high, the heart of the nation, Delhi, is transforming into a vibrant canvas adorned with G20 logos, branding and collaborative efforts. Sir, India's growth story, everyone talks about this growth story from New Delhi under British Raj to becoming the new diplomatic capital of the world, from Rajpath to Kartavya Path. What is your analysis when we say that India has come a long way? How do you see this growth story? Well, there's a complete transformation, apart from becoming the 5th largest economy on the way to becoming the 3rd largest. India has now become the fastest growing large economy in the world, a post that used to be held by China for many decades. Yeah. And the world's view of India has changed dramatically. So there's that whole transformation. But this transition, when completing Amrit Mahotsav, 75 years of independence, and as the Prime Minister Narendra Modi has shaped this vision of Amrit Kal, the next 25 years when India will become a developed country by the time of its 100th independence. Amid this fervour, Chandni Chowk, a melting pot of culture and tradition, is gearing up to project India's soft power to the world during the G20 summit. Traders inspired by the historic event have united to display a captivating array of India's heritage and flavours. The G20 summit is also expected to provide a significant boost to both the economy and the tourism sector. ये जो चांदनी चौक बाजार है, ये मुगल कालीन बाजार है, बहुत पुराना 200-500 साल पुराना बाजार है, ऐतिहासिक बाजार है। चांदनी चौक ना केवल दिल्ली में, ना केवल भारत में, पूरे विश्व में अपने फूड के लिए, फैशन के लिए, फोक के लिए मशहूर है। आपने G20 के साथ कोलैब किया है अपने
होल्डिंग पब्लिसिटी में, ये आइडिया कहाँ से आया? मतलब ये ऐसा था कि क्या नाम है वो, क्या नाम है, कारपोरेशन वाले और सब सफाई अभियान चल रहा है, G20 आने वाला है, तो आप ऐसे बोर्ड बनाइए, उस पर ये लिखवाइए, तब से करा दिया आपने। चांदनी चौक के फेसलिफ्ट के बाद और मेट्रो कनेक्टिविटी के बाद में बहुत सारे लोग चांदनी चौक आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं और खाने का आनंद लेने आते हैं, परंतु फिर भी हर एक को फिर भी डर होता है यार चांदनी चौक बहुत भीड़ होगी, तो जितने लोग इच्छा रखते हैं चांदनी चौक आने की, उसमें से हार्डली डिग्निटरीज की सिक्योरिटी कंसर्न्स भी कई बार होते हैं, तो 25 या 30% ही जो जनता है, जो पब्लिक है, वो यहाँ पे आ पाती है। तो एक CTI और दूसरा जो यहाँ की लोकल एसोसिएशन है, उनके साथ मिलके एक कोशिश की जा रही है कि चांदनी चौक की जो आत्मा है वो हम उस दिन बेला माउंट पे उसको उतारें। Time around when G20 heads of the state summit is going to take place in the month of September, Chandni Chowk, perhaps the hub of soft diplomacy in India, is going to make diplomats, delegates wear Indian traditional clothes. This Chandni Chowk will make delegates, diplomats eat Indian food. The stage is also set for a cultural exchange that transcends borders, with diplomats witnessing the fusion of tradition and innovation. I feel that India's time, now India is in the limelight. We are now gaining, our economy is growing at a fast pace and all. So of course, we will definitely exercise our influence on the Westerns also. And believe me, Indian fashion will be now the trendsetter. As the city readies itself to welcome foreign dignitaries, Delhi's journey will be a testament to India's transformation into a diplomatic capital and a beacon of soft power on the global stage. Well, it's time to slip into a very short break. Stay tuned. We'll be right back with more news and updates on the other side. Insists that apart from the Home Minister, the Prime Minister should speak. Is there anything wrong in that? Because they say that we were getting a sense that we were not going to hear from the Prime Minister. I can understand your charge that they've made it only about the Prime Minister and not the rest of the government. But is there anything wrong with wanting the Prime Minister to speak? Wherever it was said that Prime Minister won't speak or Prime Minister won't address, it was never said that way. Only thing is that he said that I'll address the issue, complete issue, because I am hands-on with the subject. But as let me add another point. They just wanted to use this Manipur sensitive issue to relaunch Rahul Gandhi and launch INDIA. The sad part that using Manipur issue for launching Rahul Gandhi again. Okay, fair enough. Let me just also go across to our TMC representative. Mohammad Tasif Rahman is with us. The Prime Minister also did not shy away from calling out the TMC's politics, which he called bloody politics, because of the violence that was perpetrated or was witnessed once again during these recent Panchayat polls. And it is a phenomena that is being witnessed particularly for West Bengal. We've discussed it. You and I have discussed it on multiple occasions. Isn't Chief Minister Mamata Banerjee categorically wrong when she says there is no evidence of this violence that the Prime Minister spoke about, that TMC at the helm is responsible because of this, responsible for the violence that goes on under its watch as a state government? If you hold BJP responsible for Manipur, surely you are responsible for this violence during elections. Absolutely, Shivani. First of all, thank you for having me. And you are conducting a very serious debate. So I don't want a voutabetry, and I don't want to hear anything from the Prime Minister who speaks on Manipur for 2 minutes from 6:44 to 6:46. After 1 hour 38 minutes, he started drinking water because he knew he was lying. But again, I want to explain you because. Hello and welcome back. You're watching CNN News 18. Well, did you know where is India's first post office? Well, let me explain it to you because the location will really surprise you. India's first post office is located on the banks of Kishanganga River, the de facto line of control in Jammu and Kashmir's Kupwara district, with Pakistan occupied territory just across the stream. With no network and connectivity, this has been part of people's life in this area for years. Now let's take a look at this ground report by Ishan Wani.
Situated at Keran village, this post office has existed since pre-partition era and has been a lifeline for soldiers and civilians living near the line of control in Kupwara district. Bearing the pin code 193224, this post office has Pakistan-occupied territory just across the stream at a stone's throw. With no network connectivity, this post office has been part of people's life in this area for several years. Recently, a signboard was put up near it, which read, "The first post office of India," as it is the first one from the LOC in terms of distance. Even during the war and worst of times between India and Pakistan, the postmen have delivered letters to their destinations. Postmaster Shakar has been running this post office from his own house since the floods in 1993. इंडिया का फर्स्ट पोस्ट ऑफिस है सर, पहला। जब से ये दो मुल्क एक थे उस वक्त भी ये पोस्ट ऑफिस चलता सर। उसके बाद आज भी पोस्ट ऑफिस है, इसकी बहुत फैसिलिटियाँ हैं सर। इसमें गांव वालों लोगों को वहाँ बैठे हुए हर एक किस्म का लेटर आता है। पोस्ट ऑफिस बना है सर, ये तो हमारी यादाश्त से पहले का बना हुआ है। ये हमारे बुजुर्ग जो गुजर गए सर, उन्होंने पहले हमें बोला, उनके पास हिस्ट्री है कि ये पहले से यहाँ था। Today I'm here with an interesting story. The board is self-explanatory, but let me just tell you, this is the first post office of India. This is Keran, line of control, and right bang at the line of control this post office exists. I'll show you that where the line of control is, and this river, Kishan Ganga, what Pakistan calls Neelam, is the line of control. On the other side, there is POK, and this acts as a line of control between the two countries. But this is the place which is called as India's first post office, since it's right there on the line of control. Pre-partition, interestingly, this post office existed. And what Postmaster told me is that people would send letters through this post office, and their forefathers would tell them about the post office that existed even pre-partition. You can see still the letterbox hanging out there because there is no communication, no network. My mobile phone does not have any network till now. So how do you communicate? Generally, people from this area, soldiers who are deployed here at the line of control, send letters to their families. And prior to the days when there were no mobile phones, this post office was a lifeline at the line of control. It is still being used. Let me show you. I'll ask my camera person Bashir Lone to come with me. I'll show you. This is the entrance to the post office, and the postmaster sits inside, and there are banking facility which this post office offers. So yes, an interesting historic post office which even was there pre-partition, and where people still use letters and dispatch them to different parts of the world. Particularly, this has played an important role for the soldiers who are deployed right here in Keran sector at the line of control, because it is right at the line of control, and this place is a lifeline for the soldiers to guard the fence, because there could be infiltrations and soldiers do not let their guard down, and generally because there is no mobile tower, so how do you communicate? This is the post office which sends their letters. This is the first post office of India. Now let's go down again. I'll ask my Vijay to follow me so that I can show you once again. There are these tourists who are coming here, but interestingly what you will see here is the distance. Karachi is 1755 kilometers from here, Lahore 740, Peshawar 474 kilometers, Rawalpindi 408, Islamabad 407, Muri is 308, Muzaffarabad 245, and Abbottabad is 279 kilometers. So yes, this is the place which is called the first post office of India, and still in a wooden structure, in a wooden place, it still exists, and people still send letters and do banking activities through this post office in a remote area of Keran. With camera person Bashir Lone, Ishan Mani for CNN News 18. Well, it's a wrap from my side. Stay tuned to CNN News 18 for more news and updates on the other side. Thanks for watching.